बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ और आज हम जो साउंड, जो लेटर, जो वोकैबलरी करने लगे हैं वो है जनाब अल्फ़ाबेट आर की। और टीचर्स, आज के लेसन का जितना भी मटेरियल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल होगा, आप उसको गो थ्रू कर सकती हैं। आज के हमारे हासिलात तालुम यानी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम क्या है ये टीचर्स? एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम हमारे वही हैं जिनमें हम अल्फ़ाबेट्स को एड्रेस कर रहे हैं, कैपिटल लेटर लिखना सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, उसका नाम सीख रहे हैं, उससे रिलेटेड वोकैबलरी सीख रहे हैं, उसकी आवाज़ सीख रहे हैं और लेटर की और उसकी साउंड की जो है वो रिकग्निशन हम साथ लेके चल रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट चिल्ड्रन आर ऑल्सो लर्निंग सम साइट वर्ड्स ऑफ द कैपिटल लेटर आर। तो बच्चों, अभी आपने क्या देखा मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर? आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जिनके अपने अपने एक नाम है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस फर्स्ट पिक्चर? दिस इज अ रिंग। शाबाश, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ रिंग। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन, आई वांट टू मेक इट ब्लू। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ रिंग। दिस इज अ क्यूट लिटिल rabbit. Yes, ring and rabbit. So what do we need to think about? The starting sound. R, ring, r, rabbit. Good. So can you think of some new words of your own जिनकी शुरू में ये वाली r की साउंड आती हो? शायद आपकी क्लास में राबिया हो, राबील हो, रानिया हो. Good. So think if your name starts from the same sound. चलें, let's see what is the sound looks like. The sound looks like this. This is the face of the sound, not the letter, the sound. What is the sound? R. So now let's see what the letter is about. It is about the capital letter R. R. This is the capital letter R जिसकी साउंड को हम प्रैक्टिस कर रहे थे. So teachers, प्ले ग्रुप पे चूंकि हमने फोनिक्स पे फोकस किया, नर्सरी में हम फोनिक कनेक्ट कर रहे हैं अल्फ़ाबेट के नाम के साथ और उसकी कैपिटल राइटिंग के साथ. सो दिस इज द फेस ऑफ द कैपिटल लेटर आर जिसकी साउंड है र, जो कि आती है रिंग और रैबिट और राबिया और रानिया के स्टार्ट में. नाउ लेट्स सी हाउ डू यू राइट दिस लेटर. I will be writing it here on the screen and children you will follow me with your hands in the air. शाबाश. So teacher, अभी ये सब मेरे साथ एक collectively A writing करेंगे of the capital letter R and they will follow the steps. So teachers, when they are forming the letter, इनकी जो letter की जो starting है और जो ending है, it has to be correct. So let's start from the point here. Okay, जैसा कि I have always told you, some letters are written in one stroke and some are written in 3 strokes. So the capital letter R is written in 3 strokes. Starting from 1, going down, extending line. Good, shabash. बच्चों follow करें please. Then we go back up here to the number 2 and we make a round face. Shabash. Are we done? No, there is another line which is a slanting line from number 3. Very good. So teachers, अभी आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके मल्टीपल टाइम्स इनसे एयर राइटिंग करवा लें, डेस्कटॉप के ऊपर यानी टेबल के ऊपर राइटिंग करवा लें. अगर सैनिटरी अरेंज है तो वो मैनेज कर लें, नहीं तो अभी इसकी 3 स्ट्रोक राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो आपने करवानी है. दे विल स्टार्ट फ्रॉम 1, देन गो टू 2 एंड देन इवेंचुअली द थर्ड लाइन. सो प्लीज पॉज द वीडियो. All right, some practice for the capital letter writing. तो अभी किताब का सफ़ा देख के बच्चे मुझे बताएंगे कि इस पेज के ऊपर अब इनको क्या क्या नज़र आ रहा है. इनको नज़र आ रहा होगा आज का कैपिटल लेटर R और उसका साउंड. गुड. एक क्यूट से रैबिट की पिक्चर और एक रिंग की पिक्चर जिसमें कलर इन्होंने करना है. एक्टिविटी फॉर द आर्ट कॉर्नर, आज के साउंड की पोम और एक होमवर्क. सो We'll proceed teachers the same way. आपके लिए जो teachers note लिखा हुआ है इसको आपने ज़रूर consider करना है and that is how I'm going to continue with my lesson.
डियर टीचर्स रिमेंबर, मैं लेसन में एक्टिविटी का स्टार्ट दे सकती हूँ, आपको एंगेज कर सकती हूँ, मगर बच्चों से परफॉर्मेंस क्योंकि आपने करवानी है, सो यू गोना मेक श्योर दैट दे आर राइटिंग द कैपिटल लेटर. नाउ दिस आर्ट एक्टिविटी टीचर्स टू मेक लिटिल रैबिट्स विद कॉटन बॉल एंड चार्ट पेपर, ये आप इनको चाहें तो क्लासरूम के आइदर यू कैन गिव इट इन द स्टार्ट ऑफ द लेसन. आपको चाहिए कि आप ये वेरिएशन करती रहें अपने लेसन में, कभी आर्ट एक्टिविटी स्टार्ट में करवा के उसको लेसन के प्रॉप के तौर पे इस्तेमाल कर लें, और कभी लेसन को करवाने के बाद एंगेज करने के लिए आर्ट को जो है आप लेसन के एंड पे लेके जाएं. योर डिसीजन, योर क्लास. आई जस्ट गिव यू सम सजेशंस कि आप इस तरह के छोटे से रैबिट के कटआउट्स दे सकती हैं एंड दे कैन पेस्ट कॉटन ऑन इट. दिस इज वेरी इजी एंड वेरी लो कॉस्ट मटेरियल. इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो यू कैन ड्रॉ मल्टीपल कटआउट्स ऑफ द रैबिट्स. एक ही सीजर से जो है आप 6-7 रैबिट्स के वो कटआउट्स काट लें. शो दिस पिक्चर टू द चिल्ड्रन. बाकी का काम बच्चे खुद से कर लेंगे. दे नो हाउ टू पुट ग्लू एंड पेस्ट कॉटन. नाउ लेट्स सी, अभी हमने जो कैपिटल लेटर सीखा, बच्चों को उसका नाम याद आ गया? आर, यस, और उसकी साउंड र. और राइटिंग कैसे करे थे? 1 डाउन, 2 फेस, 3 slanting line. That is the capital letter R. That is wonderful. Now let's read with me now. अभी पिक्चर तो आपने देखी रिंग की, लेकिन अभी हम रिंग को रीड करेंगे प्रॉपर. R, R, ring. So you have to say the sound with the letter. Then we go to R, R, rabbit. Good. This is how we read, teachers, with the help of letters and phonics together. So बच्चे अब इसकी रीडिंग भी करेंगे और फिर ऐसे ऐसे इसमें कलरिंग भी कर लेंगे. But today, dear teachers, ये जो रिंग और रैबिट है, ये इनके 2 साइट वर्ड्स हैं. इसके ऊपर आप मजीद 2-3 साइट वर्ड्स भी ऐड कर सकती हैं जो कि छोटे हैं और ईजी हैं और डेली यूज़ के लिए हैं. तो अभी बच्चे जब ये टास्क कंप्लीट करेंगे टीचर्स, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू गो होम एंड देन परफॉर्म दिस एक्टिविटी. दे आर गोइंग टू रिपीट द साउंड एंड द लेटर नेम, और फिर इसके साथ साथ वो एटलीस्ट इस साउंड के 5 जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स घर में ढूंढेंगे. तो दे कैन लुक अराउंड फॉर रिबन्स, दे कैन लुक अराउंड फॉर एनीथिंग विच हैज़ द स्टार्टिंग साउंड विद द लेटर आर. There's a worksheet in the description box for extra writing practice. And dear teachers, आज के जो साइट वर्ड्स हैं ये आपने मल्टीपल जगहों पे इनको या तो लिख के दिखाने हैं या लिखे हुए देने हैं. आप इनको बोर्ड पे लिख दें. The words are rabbit and ring, और ये दोनों आज इनके साइट वर्ड्स हैं. Make sure you display them in the classroom also. So there's a small poem related to the sound. इसको हम सिंग करते हैं टीचर्स. आप चाहें तो बच्चों से कोई भी ट्यून बनवा सकती हैं. That is totally up to you. Feel free for that. I am just going to sing this poem one time, और फिर बच्चों से आप क्लासरूम में या प्लेग्राउंड में ये एक्टिविटी कराएंगी. So let's read the poem. See my puppy rip the rug. Rrr, rrr, rrr. See my puppy rip the rug when he pulls so hard. Rrr, rrr, rrr. जब आप वो पपी अपने रग को रिप करता है तो जो साउंड आती है वो भी वही साउंड है जो आज के लेटर की है. सो टीचर्स, एंजॉय दिस एक्टिविटी एज फन एंड मेक देम अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द साउंड एंड द लेटर ऑफ कैपिटल लेटर आर. एंड देन व्हेन चिल्ड्रन विल गो टू द प्लेग्राउंड, तो आज की एक्टिविटी करेंगे. आपको क्या लग रहा है ये क्या हो रहा है? He is hopping like a bunny rabbit. Yes. So you have to hop like a rabbit. Teachers, when you take them into the playground, आज की sound और letter और vocabulary के साथ connect कीजिए. बच्चों से कहते they can hop like a rabbit. And if they don't know how to hop like a rabbit, you can show them some video or you can perform it yourself to show it to the children. So बच्चों, enjoy the activities and do not forget the capital letter and its sound. R. Take care. Allah Hafiz.